Assalamu alaikum everyone. Shahtaj is here with you to share her learning of the new words and what she did and how she grew up in these days. And today two activities we are going to share with you. That is, one is for the reading activity and one is the writing activity. With the writing activity we will learn that I plan this activity for Shataj, and she will today, with her help, I will tell you that how to teach different new words, very small words to the स्टूडेंट्स. आप घर में ही उनको किस तरह से इजीली करा सकते हैं. और दूसरा जो है हमारा रीडर है. आज हम रीडिंग करेंगे. दिस इज़ द रीडर, और इस रीडर से हम आज न्यू वर्ड सीखेंगे. और लिटरली ये रीडर इतना मज़े का है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है कि अगर रात को आप बच्चों को इसको सुना रहे हों तो और किसी स्टोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बच्चे बग़ैर तंग किए बिल्कुल ही मज़े से सो जाते हैं. और रीडर सुनाते सुनाते दे फील सो स्लीपी दैट दे स्लीप क्वाइटली. तो जी आज अभी हम स्टार्ट करेंगे अल्लाह ताला के नाम से. और शाहताज पहले हमें पहला कलमा सुनाएंगी और उसके बाद फिर दोम कलमा हम दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे, जो कि आजकल हम लर्न कर रहे हैं. नमाज़ स्टार्ट की हुई है, वज़ू हमें आ चुका है और अल्लाह ताला के नाम हम काफ़ी सीख चुके हैं. और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अल्लाह ताला के नेम्स जो हैं, नाम उनको किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है, मुख्तलिफ़ वाक़यात को सुनाकर, तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी. तो शाहताज पहला कलमा सुनाएंगी जी. पहला कलमा तैयब. व्हाट? इरिटेट कर रहा है. ओके, लेटर ऑन आफ्टर दिस वर्क वी विल ट्रिम योर नेल. ओके, पहला कलमा तैयब. आगे सुनाएं. ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. अच्छा जी, ये तो एक वो चीज़ है ना कि बच्चे जैसे ही कैमरा को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो ये एलिमेंट था इसमें. अच्छा शाहताज, जब हम दोम कलमा पढ़ते हैं, दोम कलमा शहादत. अशहदु अल्ला इलाहा वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. जज़ाकल्लाह. अच्छा चलें जी, अब हम अपनी एक्टिविटी को शुरू करते हैं. और इसमें मैं आपसे शेयर कर दूं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये मैंने बेसिक एरोज़ रखे हैं. लेट मी टर्न द नोटबुक. इसमें मैंने रखा है ये जो अपवर्ड एरो है उसके लिए ए है, उसका मीन होगा लेटर ए. डाउनवर्ड एरो ख, एंड कर्व एरो इज ट, एंड द एरो स्ट्रेट whose face is over here, it means p, and the straight line with this face is a. तो अब हम ये डिफरेंट लेटर, मैंने ये साइंस इनके ड्रॉ कर दिए हैं. सो व्हाट द किड विल डू, बच्चा यहाँ से देखेगा कि सबसे पहला साइन कौन सा है, उसको फाइंड करेगा इन सारे एरोज़ में से, और वो लेटर वो वहाँ पे लिख देगा. जब लेटर लिख देगा तो एंड वाले कॉलम पे वो पूरा वर्ड लिखेगा और ये न्यू वर्ड बच्चा जो है वो लर्न कर लेगा. इट्स रियली क्वाइट ईजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि एक तो जो फाइंडिंग है लेटर्स की, उसकी अब इतनी बार रेपिटिशन करा रहे होते हैं कि ये जो 5 लेटर है ये तो बच्चा इसके फ़ौरन बाद से वो सीख जाता है. तो उसमें होता क्या है कि जितनी बार ए आया है, यहाँ पे है, यहाँ है, और ये 2 जगहों पे लेटर ए की रिकग्निशन एक तो बहुत अच्छे से हो जाएगी, फ़ोनिक उसको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, और नए वर्ड्स में उसको बना के बहुत आसानी से वो लिख लेगा.
So Shadaj, are you ready to writing and finding the letters? Yes or no? Yes. Okay. Take your pencil and you search this arrow. Where is this arrow? That is okay. We keep your friend here. This arrow. Find the arrow from these. Where is this one? That is going downward. From these. Quickly find that. Okay, so you write this k over here. K. Please write this k over here. A semicircle. Yes, good job. And now, well done. This upward arrow. Where is the upward arrow from these? This. Find from here. This. Upward arrow, beta. This one. This. Okay, this is letter A. So Letter right here. A. K, A. K. First make a circle or semicircle. ये up. Okay. Okay. Now, right here. No, you write with pencil, pen. Semicircle. Okay, now make its tail like this. Oh, your tail is not good. Okay, now the curve arrow. Where is the curve arrow? Please find from curve arrow. Find from these. Curve arrow. Okay, T. Write letter T over here. Okay, write it. T. Start from here. Yes. फ्रॉम द स्टार्ट जब बच्चा लेटर लिखना शुरू करता है तो भी मैंने उसको लाइन कॉन्सेप्ट नहीं दिया है. रीज़न इज़ दैट कि अगर लर्निंग करवानी है तो थोड़ा सा हमारे बच्चे को रिलैक्स करना पड़ेगा. न्यू एक्टिविटीज़ अबव एज जाके उसको हमें अगर टीच करना है तो थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्टनेस को कम करना होगा. तो अभी अगर फ्री हैंड देती हूँ उसको तो वो उसको ज़्यादा इंजॉय करके करती है और मज़े से सीख लेती है कि किस तरह से करना है. ट. वेरी गुड. मेक इट स्वीट. यस. नाउ मेक इट्स आर्म्स. Very good. Let's read it. Read the word k. K. T. Cat. Cat. What's the new word? K. T. Cat. Cat. Okay, now we write here cat. Cat. These all spellings we will write over here. K. T. Cat. Right here. Then we will clap after completion. Please first write k. This k. K. Yes. Quickly. This one. K. Right over here. Semicircle. Okay. And make. Okay. Erase it and write again. Good job. Write k with a semicircle here. Yes. Okay, this is a big semicircle. If you turn it a little bit here, then it's become correct. Now k, write it. Write it, please. Shadaj, now write a. मैं कार की भी मैं ओपन करती फिर. Okay, your car is awesome. What's the color of your car? Black. Black. Who give you this car? Baba. Baba gives you. Okay. Can you keep it on the table now? Okay. Now write a.
फिश क्षमा बन Oh yeah, it is fish. Let's raise it a little bit. Okay, now become a. Yes. Firstly, right here with the semicircle, and then make it a tail. Okay, you make it with the circle. Make a circle. Yes, now make its tail. Better tail from downward. Downward. Yes. Make from here. Yes, make a tail from here. Make a tail, baby. Okay, very good. Now write T. Yes. माँ बार बार तैयार लिखना है Yes, because here we have to complete the word. Here, beta, in this box. T, beta, like this. A straight line, then its feet, then its arms. It becomes T. K, A, T. Cat. K, A, T. तो to Cat. cat Are you a cat? no So, do you know the sound of cat? Oof. You are a furious cat or a kind cat? kind cat You are a kind cat. Okay. Now write ये किसने खा लिया write here. हाँ क्या ऐसे That straight line. Then make its arm. But a straight line. Straight line. Okay. You see. Look here. This one. Yes. मैं रिंग उतार दे Okay. You remove it. ओके ना Okay. इसको रुके इधर बस Yes. Go down till here. अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं. एक तो पेशेंस. जब हम बच्चे को कोई भी नया काम करा रहे हैं, पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. व्हाट द मिस्टेक मोस्टली वी डू कि हम सब्र किए बगैर जल्दी से चाह रहे होते हैं कि बच्चा बस जल्दी से लिख दे, वो बड़ा हो गया है, उसको समझ होनी चाहिए, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है. तो वी शुड आंसर ईच एंड एवरी स्मॉल क्वेश्चंस दैट्स इट बेबी. Very good. What this word is? तो What's this word? Meow. So what is the word? तो cat Cat. cat Cat. cat Cat. तो उसमें ये होता है कि हम चाहते हैं कि बच्चा जल्दी जल्दी कर ले, हम उसके किसी दूसरे इर्रेलेवेंट क्वेश्चन को आंसर नहीं करें. तो उसमें क्या होता है, जब तक हम आंसर नहीं करते उसका दिमाग उसी चीज़ में अटका रहता है और वो अपने वर्क को ठीक से नहीं करता है. तो ट्राई टू गिव मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस शुड बी आंसर्ड. उसमें नो डाउट बहुत मुश्किल काम है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. तो हमें इजीली उसको तभी हम कर पाएंगे जब हम उसके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होंगे. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड दिस एरो, दिस वन. वेयर इज़ इट फ्रॉम दिस? मैं इसको इस साइड पे कर But it will fall down. Please. This arrow. arrow Find from the letter from these arrows. Yes. So right over here, this is a. These are just two letters. Word. A new word. A. Right here, a with two standing lines and make it curve from the downside. अब Okay, now you are going to write a and draw a straight line from here. Yes, and from here, and curve, make a curve from the down. But a curve, not a straight line. It will become a square. But we have to make a like this. Like this. Make it, please. Good job. Join it with the standing line properly.
Yes. Now this upward. Wait. This arrow. Sorry, this arrow. Where it is? From this, the car is going like this. So which arrow is there? Yes, this is. So you will write p over here. P. P right from here. Yes, draw a standing line. Good job. Now make its face. From upward. P. Yes. P. Up. Up. What is up? Up is like this. When we go up, this is up. Up. Okay, right here. Up. 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 Like this. Yes. Yes. Very good. Now write P. You are an awesome baby. Write P. Here. Better here. Yes, like this. Yes. This word is Up. up. Very good. Put. Put. Cat. 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 Up. 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 I will give you up. 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 Very good. So ये तो हो गए शायद आज की साइड से वर्ड मेकिंग. इसी तरह आपने बाकी दो भी करवाए. तो दिस इज़ द वर्ड मेकिंग. अब ये कंप्लीट हो गई है. बाकी जो हैं 2 इज़ लेफ्ट. सो वो मैंने जस्ट आपकी हेल्प के लिए किए थे. शायद आज को मैं मोस्टली 3 वर्ड से ज़्यादा एक दिन में नहीं कराती बिकॉज शी इज़ सो स्मॉल. तो इसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है लर्न करना. गिव मी अ गुड स्माइल बेबी. गुड. ओके. नाउ कम्स टू वर्ड द रीडर. तो रीडर जो है कांट यू स्लीप डॉटी. द रीडर नेम इज़ डॉटी एंड हियर इट इज़ द राइटर नेम. ये मैं शायद आज को जब भी जो भी रीडर्स सुनाती हूँ, इसको सिखाती हूँ, तो उसका राइटर ज़रूर बताती हूँ कि किसने लिखा है. रीज़न कि जब भी बच्चा जिस तरह से ग्रो कर रहा है तो उसको पता चल जाता है कि हर बुक किसी न किसी ने लिखी होती है और जो लिखने वाला है उसको ऑब्वियसली राइटर बोलते हैं. सो टिम वॉन्स इज़ द राइटर नेम. शाहताज, व्हाट इज़ द राइटर नेम? Tim Vance. And what is the character name? What is this character? No, what is this character? Dottie. Okay, Dottie. So here is, okay, the reader name is Can't You Sleep Dottie. And let's start that why the Dottie can't sleep. This is better from this side it is started. So Dottie could not sleep. Tick tock, tick tock. Why Dottie could not sleep, Shahtaj, here? Because the sound of Tick tock. tick tock. What is this? Which sound is tick tock? Clock. Okay. Because Dottie was feeling that the sound of the clock tick tock is irritating me. So how he do that? Tick tock. How he is pretending? How is pretending irritating? Oh. Okay, so she started to howl. Oh, how it's yawning? Oh, okay. The next page, try counting the stars, said Pip. Pip is the friend. Pip is the friend of the Dottie. G. Okay, and what Pip said to start counting. Start from counting 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10. 10. Okay, so Dottie count these stars, but Dottie is still sleepy.
And what happened here? But Dotty could only count to one. Dotty just stand on the box of the dog meal and just looking out from the window. And what, it's count just one star? One. Okay. Two. And again here Dotty feeling so sleepy. So sleepy. And what it's doing? What it's doing? Yawning. Dotty don't cover the face. We should cover the face when we yawn. Okay. Mummy cover कर रहा. Because it's an animal. Have a little drink, said Susie. Who is it, Shataj? What's it? Is Chip Chip, but what's the name? Susie. Susie. Susie is the name of this little bird. And what's the name of this dog? Name of the dog is Dotty. Dotty. And the name of this bird is Mother. Susie. Susie. Okay. On the next page, so Dotty had a little drink. Slurp slurp. What Dotty is doing here? Sleep so. What it's drinking? Water. Water. Okay. Oh, again, what's its feeling? Oh. It's feeling sleepy. Okay, but then she made a portal. Like Dotty, throw the water, throw the milk on the floor, and it's again feeling sleepy. I hide in my burrow at bedtime, said Whiskers. Whiskers is again, it's the friend of the Dotty. Shataj, is it the friend of the Dotty? Okay. And what Dotty is doing here? Wag wag. Again Dotty is going to sleep because so Dotty dived under the blanket, but it was too dark. Here Dotty and the friend again go to sleep. Do you like, you and Zumar also sleep in this way? Yes. You both sleep in this way and you feel dark in the blanket. You are just like Dotty. Again it's feeling Oh, sleepy. what the Dotty is feeling? Sleepy. Sleepy. You are also feeling sleepy? You want to sleep? Okay. I like to sleep where it is sunny, said Tommy. Tommy is, who is Tommy? Turtle. Turtle. It's a friend of Dotty. G. Okay. They want to sleep. Tommy want to sleep in the sunlight. And what they do? What the Dotty do? You tell me. The mouth. Put in mouth. What? What he put in mouth? Blanket. Blanket. And where he is going? In the sunlight. G. Okay. What they do? They turn on the Light. light. What is this? Turn on the light. They turn on the light. And what they are feeling here? Sleepy. Sleepy again. And they shouted, turn it off. Turn it off. How they shout? Turn it off. Turn it off. Oof. Shouting is a good habit? No. No. Okay. Rabbit. Poor Dotty. Then Tommy had an idea. All Dotty needed was wait, a cuddle. Night, night, Dotty. Night. Dot. What happened here, Shataj? TikTok. TikTok, but what happened here? सब सो गए. So what you tell? सब सो गए. Sab so gaya. Okay. What happened here? All are sleepy. All are sleeping. Okay. Let's turn the page. Oh, what happened here? Now story is ended. और इस रीडर के सबसे मज़े की चीज़ ये है कि एंड पे कॉम्प्रिहेंशन दी हुई है ये पिक्चर्स और क्वेश्चंस के थ्रू. वेयर इज़ द ब्लैंकेट? कैन यू टच द ब्लैंकेट?
And where is the night? Night time. Okay. Okay, from this page you find where is the night time. Good job. And where the dotty howl, where it's sleeping. Okay, where it's puddle the milk. Let's make a puddle. Good. And you tell me where Bip is sleeping from this page. Bip is sleeping. Yes. And where are the stars? Where is the torchlight? And where are the whiskers? Good job. And here they are under the blanket. लुक इन दिस वे अभी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो बच्चे ने लर्न कर लिए हैं और ये आप डेली इसको अगर रिपीट कराएंगे तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये लर्न कर चुके होते हैं बच्चे और वो उसको फिर अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करना शुरू कर देते हैं. Good night. See you. It's good night. Okay, see you. Now you can imagine that it's time to sleep and she is feeling sleepy. Fi amanillah to all of you. Allah Hafiz. Give a good smile.